Goals of a Firm, Financial Management Module 201. In this module, we'll talk about the goals or the objectives of a firm or a business or a corporation or any entity which is a commercial entity. The basic objective is certainly profit maximization. हर वो बिजनेस जो इसलिए कायम किया गया है कि उससे प्रॉफिट अर्न किया जाए, जो कमर्शियल बिजनेस है, उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट को बढ़ाना, प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा करना है. एंड द टर्म दैट वी यूज फॉर इट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. Obviously, here we do not consider the ethics or the laws and the regulations. Obviously, everything has to be done in the domain or in the sphere of the regulation and the norms that we have in that business or in an economy or a society. But keeping all these factors, a business which is there commercially has to maximize the profit. So the prime objective, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से यही है कि वो अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए. इसके साथ साथ एक थोड़ा सा जो कि स्लाइटली डेलिकेटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, जिसे हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का नाम देते हैं. प्रॉफिट असल में क्या है? अगर मैंने 100 रुपए से कारोबार शुरू किया और 1 साल के बाद मुझे 10 रुपए प्रॉफिट मिला, तो मेरा प्रॉफिट 10 रुपए मेरी वेल्थ में ऐड हो जाएगा और इस तरीके से मेरी ओवरऑल वेल्थ 100 रुपए से बढ़ के 110 रुपए हो जाएगी. तो looking at the concept of maximization of profit and maximization of wealth seems to be very similar. But the slight difference is that when we talk about maximization of wealth, it is in absolute terms. यानी मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट थी वो अमाउंट डॉलर्स या रुपीस में कितनी बढ़ गई और उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करता हूँ in a commercial venture, and that is called maximization of wealth. Maximization of profit का मतलब है कि मैं in terms of percentage कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहता हूँ. यानी अगर आप ये कहें कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मिक्स वेल्थ के अंदर भी इजाफा होगा, तो ये बात गलत नहीं है, लेकिन कुछ सूरत हाल के अंदर इसमें कुछ डिफरेंस पैदा हो सकता है. But maximization of wealth or maximization of profit is the prime objective of every business, organization, or commercial entity. In addition to this basic objective or goal, then there are other goals, or there may be many other goals. These other goals may be what we call the corporate social responsibility. हम ये कहते हैं कि हर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जिस इकोनॉमी, जिस सोसाइटी, जिस मुल्क के अंदर वो ऑपरेट कर रही है, तो वहाँ के माहौल का भी ख्याल रखे, वहाँ के लोगों के लिए सहूलतें भी पैदा करे या मुश्किलात पैदा ना करे. तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे किसी इंडिविजुअल पे आती है, उसी तरह किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कॉरपोरेशन पे भी आती है. So one of the goals may be to fulfill the corporate social responsibility. Similarly, every commercial organization or a business organization also contributes to the economy. जैसे जैसे business expand होगा, क्योंकि business किसी economy का हिस्सा है, वैसे वैसे वो economy को भी expand करेगा. So an objective is also to uplift the economy of the country where the business is operating. The third goal may be एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी देना. तो जहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जा रहा है, वेल्थ मैक्सिमाइज की जा रही है, वहाँ पर यह भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि लोगों को रोज़गार फराहम किया जाए. इसके अलावा भी बहुत से ऐसे माइनर गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के हो सकते हैं जो कि वो अपने बिजनेस के ज़रिए अचीव करते हैं. बट टू कंक्लूड वी से that the prime objective of every business commercial organization is to maximize wealth and to maximize profit.